हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं द मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इस मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में सबसे पहले हमने ओवरव्यू ऑफ दिस मॉर्फोलॉजी, क्या मतलब होता है, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल जो है लेक्चर दैट आई हैव गिवन इज देयर। उसके बाद उसके हमने डिफरेंट पार्ट्स को जो है ए क्रोनोलॉजिकल स्टडी से चल रहे हैं, जिसमें कि आफ्टर द सक्सेसफुल एपिसोड ऑन रूट्स, नाउ जस्ट आई विल स्टार्ट दिस द रूट के बाद जो है आपने देखा है कि कंप्लीट जो है मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। तो नाउ दिस प्रेजेंट जो हमारा लेक्चर है दैट इज ऑन द स्टेम। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आई स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग कि दिस प्लांट का जो सीड जो है, जहाँ से ये प्लांट का ग्रोथ होता है, तो उसमें एक सेंटर में, एक सीड का सेंटर में दैट इज एम्ब्रियो, स्पेशल सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंप्लीट। तो उसमें दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का ओरिजिन होता है व्हेन एवर ऑल द फेवरेबल कंडीशन दे आर प्रेजेंट। तो उसमें आप देखते हैं कि फर्स्ट रेडिकल निकला, और वो रेडिकल निकलने के बाद इट अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म इनटू द रूट एंड दैट इज द रूट सिस्टम। तो जो उसका अपर वाला पोर्शन जो है, जिसको हम एपिकोटाइल कहते हैं, एपिकोटाइल्स में एक सेंट्रल जो है सेल्स होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक इन नेचर, और वो जो है प्लूम्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टेम जो है दैट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्लूम्यूल। तो यहाँ पर प्लूम्यूल से जो स्टेम का ओरिजिन हुआ, तो सिंपल ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रेडिकल के जस्ट अपोजिट फंक्शन करता है, और ये सॉइल को पेनिट्रेट करके ये अगेंस्ट द सबस्ट्रेटम, जो कि उसका नेचर जो है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ये होगा। तो यहाँ पर स्टेम का मतलब क्या समझते हैं, तो वहां पर हमने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। दिस डेफिनेशन यू मे गो थ्रू इज द स्टेम इज द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द प्लूम्यूल and the forms of the main axis of the plant. So whatever the structure of the plant is there, so central axis जो है that is, it is nothing, only it is the prolongation of the plumule is there. It's along with the leafy branch that is constitute the stem. As हमने आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है कि ये जो सूट सिस्टम जो है, जिसमें कि जो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है स्टेम, यहाँ से फर्दर जो है लीव्स निकलते हैं, और स्टेम में दो करेक्टरिस्टिक पॉइंट जो है जिसको हम कहते हैं नोड एंड इंटरनोड इज देयर। फ्रॉम द नोड देयर इज द ओरिजिन ऑफ द लीव्स आर देयर, द लीव्स एंड द स्टेम देयर इज सम एंगल इज देयर, दिस एंगल इज एक्सिस। तो एक्सियल बड बनती है, और एक्सियल बड से यहाँ एक न्यू ब्रांच बन जाती है। In certain cases में, other pores में, whenever the stem that is encircled by there is the leafy structure, or in other words you may say the leaves are present is there, so stem plus leaf, this is known as shoot। तो अब shoot system यहाँ पर different जो है branches हैं, along with this all leaves are concerned is there, fruiting bud is there, flowering plants are there, the various type of that is the buds are there. ये buds in due course of time they develop into the different organs are concerned, they making a branch is there। so इस टाइप के हम स्ट्रक्चर को स्टेम बोलेंगे। तो यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम, अल्टीमेटली स्टेम के क्या क्या यूनिक कैरेक्टर्स जो है उनको एक बार हम हाईलाइट आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो वी कोटेड इट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम इज देयर, कि स्टेम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो द सम इंपॉर्टेंट फीचर्स लाइक दे आर देयर, इट ग्रोज अवे फ्रॉम द सॉइल टुवर्ड्स लाइट। व्हाट नाउ यू सी इज देयर, कि जब हमने इससे पहले आपको रूट के बारे में पढ़ाया था कि रूट जो है दैट इज वो डार्कनेस की तरफ जाती है,
और यहाँ पर स्टेम का जो ओरिजिन जो है जस्ट अपोजिट टू द रेडिकल इज देयर। जो रेडिकल डीप सॉइल में जाता है, ये जो है जस्ट अपोजिट उस रेडिकल के, ये टुवार्ड्स दैट इज द एटमोस्फेयर की तरफ आता है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसका जो प्लूम्यूल से जो एलोंगेशन हो रहा है, डेवलपमेंट होता है, तो ये लाइट की तरफ जो है इसकी मूवमेंट होती है। तो दैट्स व्हाई इट शोज दैट इज द पॉजिटिवली टू दैट इज फोटोट्रॉपिक और निगेटिवली टू जियोट्रॉपिक। ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसके जस्ट अपोजिट जो है the its movement is going on, its growth is going on is there, so it grows away from the soil towards the light। ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है और ये सॉइल को छोड़ के परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर जो है सीधे सॉइल से निकल के बाहर आता है। इट इज निगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मैनी टाइम्स इज देयर। क्योंकि ये जो है जियोट्रॉपिक फोर्स के अगेंस्ट में ये मूवमेंट होती है, तो इट शोज निगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली दैट इज द फोटोट्रॉपिक। फ्रॉम वेयर द लाइट इज कमिंग इज देयर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ दैट इज द लाइट, ये इसकी मूवमेंट होती है। तो इट शोज दैट इज द मूवमेंट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक in nature is there. Then if we see, observe minutely is there, so there is a horizontal septum, you may use the term is there, interval horizontal septum जो है they are present, so they are technically they are known as nodes and that is the internal node respectively। तो जब वो septum प्रेजेंट होता है, तो जहां पर जिसको हम नोड कहते हैं, वहां से नोड से जो है इट इज ओरिजिन ऑफ दैट इज द लीव्स और दैट इज द रूट्स, दे आर arising is there। So the roots that is also derive may originate from this node is there। Elongation of the internodes which is responsible for making a height of the any plant is there। और सो इट बियर्स बर्ड्स, यहाँ पर आप देखते हैं कि इस पर जो है डिफरेंट टाइप की बर्ड्स आर देयर। सो द एक्सिलरी बर्ड्स, देन दैट इज द प्रोमिनेंट बर्ड्स, अदरवाइज वेजिटेटिव बर्ड्स भी होती है, सो विच प्रोड्यूस दैट इज डिफरेंट ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज देयर। द टर्मिनल, यहाँ पर बर्ड्स जो है, सपोज दिस इज द स्टेम इज देयर, और यहाँ पर जो ग्रोथ जो है इस टर्मिनल पर which is responsible for height, height की जो, so this is the terminal, it is responsible for the height of that is the plant is there। auxiliary जो है that is derived from that is this, suppose कीजिए this is the node is there and from this node ये leaf is there, from this leaf this is auxiliary bud। auxiliary this bud जो है it is responsible for making any branch is there। इस टाइप से जो है that is ये different इसका जो है the dimension of this plant body having different type of branches are there, so that is auxiliary buds are responsible is there। Generally whenever it is in young stage, it is mostly in green stage there। So young stage it is chlorophyll, by which later on it is changes into woody and dark brown is there। So earlier stage when it is in younger stage, it may also perform the process phenomena of photosynthesis is there। So these are the basic characteristic feature of that is the stem। stem क्या होता है, उसके peculiar characteristic feature क्या क्या है। after that we may say कि these, as we have studied that the plants or the trees, they show their a variable duration of lifespan is there।
So it means how they adapt in changing of this environment is there. So in whatever the modification for their survival, the stem shows also modified like that the root is there. So here that is the modification of stem. यहाँ पर modification of stem जो है by which the modification of stems perform three unique or that is the peculiar distinguished functions are there. Whatever the structure of the stem is there, they perform three very important distinct functions, and those functions, if we conclude it in a very short term, that is, one is perination. Perination for a long time is there. How that is they survive for a long. If unfavorable condition prevailing in the environment when these stems they are underground, and whenever that is the only favorable condition is comes out is there, then that is they start for germination is there. So this perination for a long time they are submerged into the soil is there. So there is no any effect of that is the environmental condition is there. In such a way they can survive a long time even where there is a unfavorable condition are existing is there. Second, that is they are, that is most important function, they are vegetative. They also perform the phenomena or process of vegetative reproduction is concerned is there, where their pigment that cut into the pieces is there, and that pieces jo hai, they are responsible for the formation of a complete plant or tree is there. So they also show that is the vegetative reproduction. Then after that, that is the storage of food. So it does the unfavorable condition where they required for their survival, they also accumulate its food is there. So they perform their main function is to storage of the food is there. So these three important features, they modification of the stems they are carried out is there. Then after going through the different distinguished functions of that is the stem is there, then the classification of underground stems, as we have discussed is there, कि where there is a three categories is there where the stems they are located is there. Out of these locations, some stems which are underground, the underground are those stems which are submerged into the soil is there. So whatever that what type of the modification they are carried out, so they are called the underground modifications. Out of these underground modifications, they are that is the following types, which may be that is designated as the following terms we generally use there. The underground modification of the stems, number one is rhizomes. If we take the example of that is the ginger, which is technically it is known as gingiber officinale. Gingiber officinale, they are that is commonly known as ginger, and the same is turmeric, which is scientifically known as curcuma domestica. Curcuma domestica, it is commonly known as turmeric. ये सभी जो है they are in a rhizome stage, compact form is there where that is the scales, antnode and internodes followed by that is the scales, they are present and they are in bulbous structures. This is called the rhizome. Their example is they are represented by gingiber officinale, commonly known as ginger, अदरक हिंदी में बोलेंगे, and the other is curcuma domestica. By the nomenclature, domestica is there because in household it is very much used is there. So the curcuma domestica, it is commonly known as turmeric, जिसको कि हम एक हिंदी में you may use the term is हल्दी.
और ये that is having a special pigment, so it is both are very much used in our domestic day to day life is there. So it is rhizome is there. Then the next underground modification of the stem is that is the tuber. It is type of a stem is there which is completely underground is there, and this tuber is represented by solanum फैमिली का है, सोलेनेसई फैमिली से का है, दैट इज पोटैटो. ये जो है पोटैटो जो है इट इज हैविंग दैट इज द स्टेम विच आर बल्बस स्टोर द स्टार्च इज देयर बल्बस फॉर्म में, जिसमें कि यहाँ पर जो है इसमें इसकी जो नोड्स एंड अंडर नोड्स दे आर इन कंपैक्ट फॉर्म इज देयर. It also perform the process of vegetative reproduction is there. So seedling time where there is a breeding season is there. So in that time जो है that is you cut into the pieces and put into the soil is there. So from that piece a young plant is that can be generated is there. तो इस टाइप से अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम इज दैट इज ट्यूबर. देन इट इज बल्ब. bulbous a bulb like structure is there. This bulb like structure further demarcated into two groups is there. Then is tunicated and other is scaly. Tunicated it is a type of soft and that is transparent covering over the bulbous like structure. बल्ब पर एक सर्कुलर जो है इस पर जो है कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिशन. सो दिस बल्ब इज demarcated into two category. One is tunicated. It is represented by onion. ये जो ऑनियन की आप देखते हैं बाहर की स्केल, देन सक्सेसिव स्केल्स जो है दे आर दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ दैट इज द, इसमें नोड एंड इंटर नोड दे आर दैट इज द कंपैक्ट फॉर्म इज देयर एंड द लीव्स दे बिकम द bulbous इज देयर. सो बल्ब लाइक स्टेम जो है दे आर रिलेटेड टू tunicated and other is scaly. Scales that is the flex of that is the represented by garlic. ये जो है both are having that is the bulb like structure, so they are bulb wheels are there. Corm that is colocasia, they are that is the compact of the scaly leaves are there. So ये सभी जो है they are underground, they which are modification of that is the underground stems are there, though they are present into the soil is there. सेकेंड टाइप ऑफ कह सकते हैं कि स्टेम की मॉडिफिकेशन है, दैट्स व्हाई यू मे यूज दैट इज द टर्म इज सब एरियल मॉडिफिकेशन. सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम आर दोज स्टेम्स which are partially submerged into the soil followed by they come on the surface and they become aerial is there. So because they are not completely submerged into the soil, so that's why they are known as sub-aerial modification of the stems. Sub-aerial modification of the stems, those stems which occur in mostly in herbaceous plants. ज्यादातर ये उन प्लांट्स में होती हैं कि जो प्लांट जो है ना हर कैटेगरी में आते हैं. स्मॉलर वन इज देयर, सम पार्ट रिमेन्स इन अंडरग्राउंड and the remaining part in aerial. That's why they are known as sub-aerial modification of the stems. They are that is the following types. कहने का मतलब यह है कि इसमें जो स्टेम जो है, जो इसमें almost 50% of that is the body of the stem is that is under the soil and the 50% comes into the air is there. So that's why they are known as sub-aerial modification of the stems and they are represented by following further structures. Technically we use the term is that is the first is runner. यहाँ पर रनर जस्ट आई हैव ड्रॉन ए स्ट्रक्चर ऑफ ए दूब घास बोलते हैं जिसको, इट इज टेक्निकली इट इज नॉन एज ऑक्जेलिस. इट इज कॉमनली नॉन एज दूब घास.
कॉमनली नॉन एज दूब घास। यहां पर आप देखते हैं कि ये जो है दिस इज रनर बिकॉज दिस इज द क्लस्टर्स ऑफ ये स्टेम जो है, दीज आर द लीव्स। यहां पर इंटरनोड जो है दैट इज वेरी मच लॉन्गर एलोंगेटेड इज देयर, और ये है एडवेंटिशियस रूट्स। ये जो है क्रीपिंग करके चलते हैं। आप देखते हैं दिस स्ट्रक्चर जो है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्जेलिस विच इज कॉमनली नोन एज दूब घास। ये जो है रनर जो है कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड टाइप की जो इसमें सब एरियल का मॉडिफिकेशन है स्टेम्स का, दैट इज नोन एज सकर्स। If we take the example of this sucker is concerned is there a mother plant body is there, when a branch of this a little bit portion जो है that is submerged into the soil, followed by its become that is a perpendicular and making the leaves are there। तो यहाँ पर जो है सब जो है सेल्स जो है रूट्स जो है दे आर दैट इज कॉल्ड द सकर्स आर देयर। तो इस टाइप के जो स्टेम्स को है जिसमें हाफ जो है ना सब एरियल पार्ट जो है दैट इज इन द सॉइल एंड अदर इज बिकम्स एरियल, सो दे आर कॉल्ड एज suckers are there, and they are represented by that is podina. It is scientifically known as metha that is commonly known as podina, and it is the example of the sucker is there। then it is stolons जो है दे आर मोस्टली सब एरियल मीन्स दे आर मोस्टली जो है एक्वाटिक मीडियम में मिलते हैं, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉबेरी जो है कोलोकेसिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वट एवर दैट इज द स्टोलन्स आर देयर, दे आर दैट इज द सेमी एक्वाटिक कह सकते हैं, और इसमें भी स्टोलन जो है लाइक दैट इज ए फॉर्म ऑफ दैट इज द रनर इज देयर। मोस्टली दे आर इन टेरेस्ट्रियल इन नेचर होते हैं, ये जो है बट एक्वाटिक इन वंस इज देयर, सो दे आर दैट इज कॉल्ड स्टोलन्स। The modified form of that is the runner are there, represented by an example is strawberry is there। then that is the fourth type of that is the sub aerial modifications, they are called that is the offsets जो है they are the important feature of this plant is having that is the offside, and this offside means that is also belong to the sub aerial modifications of the stem, and it is represented by water hyacinth। ये just what we had described that is the structure of that is the water hyacinth। ये जो है एक weed होता है, weed जो है that is technically it is known as Ecornia crassipus, CRAPI इकॉर्निया क्रेसिपस। इसको इकॉर्निया क्रेसिपस इट इज साइंटिफिकली इकॉर्निया क्रेसिपस, दिस इज नोन एज वाटर हाइसिंथ, और इसको हम द लैंग्वेज इन हिंदी दैट इज ऑल्सो नोन एज जलकुंभी। इसको जलकुंभी जो है दैट इज बी यूज्ड, एंड दिस इज टेरर ऑफ बंगाल। ये जो है एक एक्वाटिक वीड जो है अनवांटेड जो है ये ग्रो करता है, तो इसमें जो है दैट इज व्हाट एवर द फौना विच इज प्रेजेंट इन द वाटर इज दैट इज suffocated, and that is the most of the fishes they are die in there in presence of this jalkumbi। so there that is यहाँ पर the structure जो है आप देखते हैं कि ये मोस्टली सबमर्ज्ड वाटर में है, जिसमें कि ये एडवेंटिशियस रूट है, ये लीव्स है, पॉली डिफरेंट टाइप के इसमें फ्लावर आते हैं, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर बिटवीन दैट इज द टू सब्सिक्वेंट इंटरनोड्स दैट इज कॉल्ड ऑफसेट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इकॉर्निया क्रेसिपस व्हिच इज कॉमनली नोन एज वाटर हाइसिंथ, आल्सो नोन एज जलकुंभी। थर्ड कैटेगरी जो स्टेम की जो है दैट इज aerial modifications, the stems modified which are upright in the environment is there, so for their survival how they modified
and some of them are phalanges there. यहाँ पर देखते हैं कि stem tendril. Stem tendril, just I have drawn a conclusive general structure of this tendril is concerned is there. Yeah, this is the parental body is there, from where there is the axial bud is there, this is the node or this is the internode is there. So this structure from the axial buds become, that is in the form of tendril, and this tendril a delicate tubular like structure which that is encircled over the surface, and it is responsible for helping the plant to grow is there. So the stem tendril जो है axillary buds which is modified in the tendril in the form of tendril, and it is very much prevalent in that is the cucurbits. cucurbitaceae family में cucurbits को ये represent करते हैं, जिसमें कि इसमें stem जो है that is become in tendril form is there. Second is that is stem thorn. यहाँ पर जो आप देखते हैं कि इसमें जो ग्रेजिंग एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके ये डिफेंस के लिए यूज होते हैं. इसमें हार्ड बॉडी शार्प पॉइंटेड फॉर डिफेंस from that is the grazing animals. It is represented by bougainvillea and duranta. Duranta and bougainvillea इन पर थॉर्न प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कि एनिमल जो है इसको अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज द duranta. यहाँ पर देयर लीफ इज देयर, डिफरेंट मल्टी कलर्ड फ्लावर्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट. दिस थॉर्न जो है ये ट्रांसपिरेशन से भी ये बचाते हैं और मोस्टली ग्रेजिंग एनिमल से जो है इसकी प्रोटेक्शन करते हैं. So this is also modified form of the aerial modification. Stem is there. Third is phylloclade. Phylloclade actually that is the xerophytic plants are there. Phylloclade and that is the cladodes. Phylloclade वो ऐसे प्लांट होते हैं जहां पर कि स्कार्सिटी ऑफ द वाटर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. तो मोस्टली जीरोफिटिक प्लांट्स में अगर हम देखते हैं, अगर इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ओपनसिया इज देयर. ओपनसिया जिसको ओपनसिया जो है इट इज जीरोफिटिक प्लांट इज देयर. तो स्कार्सिटी वाटर जो है वहां पर इसमें जो अनलिमिटेड जो फिलोक्लेड जो है यहाँ पर जो लीफ जो है दैट इज मॉडिफाइड इनटू द थॉर्न एंड संकन स्टोमेटा होते हैं कि ट्रांसपिरेशन रेट जो है कंप्लीटली जो है एब्सेंट और रिड्यूस हो जाता है. अब उस लीफ का फंक्शन जो है वो कौन करेगा? तो देन दैट इज इट इज द स्टेम विच इज मॉडिफाइड इनटू द फॉर्म ऑफ लीफ इज देयर and it is being it is succulent and green in color, so it perform the function of that is the leaf is there. So such type of the plants they are known as phylloclade and it is represented by opensia और cactus family में ये belong करता है. इसका साथ दूसरा एक ग्रुप जो है that is also known as cladodes. इसमें limited growth होती है. Example is asparagus. इसमें जो ग्रोथ जो है स्ट्रक्चर सेम है, इसमें जो ग्रोथ है दैट इज लिमिटेड इज देयर और वेयर इन फिलोक्लेड्स द ग्रोथ इज अनलिमिटेड. तो यहाँ पर इन बोथ द केसेस द लीफ जो है दैट इज इन रिड्यूस्ड फॉर्म एंड दैट इज चेक द ट्रांसपिरेशन रेट इज देयर वेयर दैट इज द फंक्शन ऑफ द लीफ दैट इज परफॉर्म्ड बाय द स्टेम is there in the form of leaf. So such type of that is the stems they are phylloclades and the cladodes are respectively. Then bulbils this is represented by onion and garlic and agave. यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्टेम इज कंप्लीट रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर रिप्रेजेंटेड एज bulbils. So these are the different type of that is the modification of the stems and different category of this group is there. Then the most important function, what do you think that is the most important function of this stem are? They are primarily function. Primarily function में आप देखते हैं they support that is the leaves and that is the branches is there, conduct H2O and minerals is there, bear flower and that is the fruits are there. These are the three important features जो है they are having the important functions of the stem is there. क्योंकि all translocation, all transportation के ये stem is responsible and that is the maturity stage, flower and fruits they are also having that is bear is there. इसमें जो है
ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है दैट इज प्राइमरी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी, दे आर नोन एज प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में आप देखते हैं कि परफॉर्म बाय द स्टेम्स आर, they are food storage, they are, then it is pollination, vegetative propagation, then photosynthesis and the protection, and that is the support. These are the secondary, that is the characters which is performed by the stem is there. So these were the different technical terms which we have included in this chapter, in this lecture is there. Hope that you people must have, that is, get some knowledge with this lecture is there. Now, in the last but not least, if you think these contents are beneficial to you, please share, like and subscribe accordingly. Thank you.